भी ऐड करेगा. हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं. It's now time for a very cool lecture, and one that I'm really excited about, because we're going to talk about how to implement CSS animations. So, as I said, you're going to learn in this lecture how to create CSS animations using the keyframes add rule and the animation property. ठीक है, क्या चीज पढ़ेंगे इसमें? क्या? एमिनेशन कौन बोला? चलो. So what we're trying to do is this अब ये बता रहे हैं कि जो आपको पढ़ा रहे हैं ना ये कहाँ पे इम्प्लीमेंट करेगा, ये देखते हैं. animation that we're going to see here. So watch carefully at these two parts here of or H1 element. देखा? So this one fades in and it also moves in from the right side here, right? And this one moves in from the left side and it also fades in. So let's take a look again. So that's it. This one fades from the left, and this one fades in from the right. So let's code these animations in CSS, and it's really cool, believe me. Now, there are generally two types of animations in CSS. The first one, which is also the easier one, is to just use the transition property and then change the properties that we want to animate on an event, like when we hover the element. And I'm sure that you're familiar with this method, and if not, don't worry, because we're going to use in the next lecture. But what we're doing in this lecture is a bit different and actually a bit more advanced and cooler, because these animations allow us to put more options, and so they're a bit more complex. So let me show you. अरबिक उर्दू नहीं है भाई, आप इतने जदीद नहीं हुए यहाँ पे. How it works. So we start by creating an animation that looks exactly like we want it to be. And in order to do that, we use the keyframes add rule. So we write add keyframes. Add keyframes, and then we give the animation a name. And we're going to start with the first part, so the heading primary main, which remember moves in from the left. So I'm going to call this animation move in left. Okay. ये अपना नाम खुद दिया इसने, ठीक है? नाम कुछ भी दे सकते हैं. उसने ये नाम दे दिया. And now in here I can specify what I want to happen in each moment of time of the animation. So we start with 0%, which is before the animation actually starts. So this can also be called the start. And then the finish is at 100%, which is when the animation finishes. But we can put other steps here in the middle. So for example, we want something to happen at the moment where the animation is at 80%, for example. And we could do 50, we could do 36, we could do any percentage here that we want. But let's just start with 0%, so the initial state, and then 100%. समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ये एनिमेशन लगाएगा. अभी ये क्या बोल रहा है? 0% का मतलब क्या है? बिल्कुल स्टार्ट है, और 100% का मतलब है एंड है. और बीच में आप जितने मतलब आप 10% के बाद कोई लगाना है लगा सकते हो, ठीक है? ये आपके ऊपर है, जितना लगाना चाहो 0 से 100 के दरमियान में, ठीक है? Which is the final state. So how do we want the element to look like before it starts to move in? सबसे पहले जब स्टार्ट मूव इन करेगा, मतलब 0 पे होगा, तो कैसा होगा? First we want it to be invisible, right? So what we can do is opacity 0. So at the beginning of our animation, the opacity will be 0, and at the end, of course, we want it to be back to 1. So opacity 1. इसने क्या किया? 0 पे opacity को 0 कर दिया और 100 पे 1 कर दिया. मतलब 0 पे वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा, ठीक है? जो भी आपका जिस पे भी ये लगाएगा, ठीक है? So that's one of the properties that we're animating here. Now, for the browser performance, it's best to only ever animate two different properties. One is opacity, which is the one that we're using here, and the other one is the transform property. That's what the browsers are optimized for these two properties. But with transform, we can do a whole lot. And so it's everything that we need actually to make all these cool animations that you can imagine. So remember that the element comes in from the left.
So where do we want it to be on the beginning, before the animation actually starts? We want it to be more in the left than in the beginning, right? And so we can use transform and then translate x. And why x? Well, because कल हमने ट्रांसलेट पढ़ा था ना, x y दे रहा था, अभी सिर्फ x की बात कर रहा है. we want it to animate in the x direction. So remember, the x direction is like this. Yes, sir. So from left to right. And why x? Well, because we want it to animate in the x direction. So remember, the x direction is like this. ठीक है, x का मतलब पता है ना आप लोगों को, यहाँ से शुरू होके इधर जाएगी. y अगर होगा तो ऊपर चली जाएगी, माइनस होगा तो नीचे चली जाएगी, x माइनस होगा तो पीछे की तरफ चली जाएगी. सही है? So from left to right, and the y direction or axis goes from the top to the bottom. So we want to translate it in the x direction, and we want it to be more in the left than in the beginning. And so it's a negative value. So let's say 100 pixels minus. Okay? Because remember, तो अपनी करंट स्टेट से जो भी जहाँ पे हमने उसको रखा हुआ है उससे वो पीछे हो जाएगा. that the direction goes from left to right. So a positive value means it goes to the right, and negative value means it goes to the left. So just like in basic mathematics. All right, but moving back here, how do we want it to be when we are at 100%? We simply want it to look the way that it looks now, right? And so we say translate 0. And why 0? Well, सौ पे उसने कहाँ पहुँचा दिया, जिस जगह पे वो थी पहले से. because if we translate it 0, then it's going to look exactly the way that it looks right now. Makes sense? So this is the very basic animation, just with the initial and the final state. So let's now actually apply this animation. And so for an animation to work, there are only two properties that we have to really specify, which are called animation name. So an animation name, which is the name of the animation we just wrote, and so it's move in left. Move in left. And then the animation duration. Okay, animation duration. And so this is the time that the animation should take. Just to see it in the beginning, let's put 3 seconds. So it takes a longer time so we can see it's actually working. Can actually put 5 seconds, then it takes even a bit longer. So these are the only properties that are required for an animation to work. Now there are a lot more properties, but I'm going to show them to you in a second. Now let's just see if this actually works. And so we need to reload our page now. And yeah, you see, it's working. Great, amazing, right? This is really fantastic. So let me play it again. So it's happening really slow because we specified it for 5 seconds, but we can then change that. Now let me play the original one again. And you see that in this version, it actually first goes a bit in that direction and then it moves back, right? Let me play it again. So it's this. वो कह रहे कि ये ऐसे आया और फिर पीछे गया और फिर आया. तो ये कैसे करना है वो बता. A small movement in this direction. So how do you think we are going to do that? What do you think? And that's right, we're going to use this 80% here. So what we can say here is that we want it to be, at this point, translate x to be 20 pixels, for example. Because remember, if we're specifying a positive value here, it will go to the right side. So the final position is 0, the initial position is a lot more to the left, and then this intermediate position, let's say, is a bit more to the right. So let's check it out. And yeah, nice. That's really nice. Let's just put it a bit slower. Now that we have this animation really going on already. So just in 1 second. तेज होगा, ठीक है? All right, maybe that's a bit too much. I will leave it just at 10 pixels. जी, मैं पूछ रहा. Great. So this already works. Now I told you that there are other properties for animations that we can also. इसको लिख लें हैं हम लोग, ठीक है? जी ठीक है भाई. की फ्रेम्स आइडेंटिफायर मतलब उसका नाम हमने क्या लिख दिया, कुछ भी दे सकते हैं. या आप बार बार अलग अलग जगहों पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? अगर एक दफ़ा एनिमेशन आप बना लोगे तो आप अपनी मर्जी से जहाँ यूज़ करना चाहो उसको बार बार कर सकते हो, ठीक है?
की फ्रेम्स एक वो है ना उसका कीवर्ड है, ठीक है। ये CSS का अपना वो है लिखने का तरीका। जब भी आप क्या कहते हैं CSS को एनिमेशन बनाओगे अपनी पूरी कस्टम, तो आपको ये की फ्रेम्स के थ्रू लिखना पड़ेगा। वैसे अगर किसी ने वीडियो एडिटिंग करी है तो उसको फ्रेम्स का तो पता होगा। पता है किसी को फ्रेम्स के बारे में क्या होते हैं, बताएं। हाँ, मतलब कि जब आपकी वीडियो बनती है ना, तो आप लोगों को क्या लगता है वीडियो कैसे बनी? कैमरा क्या करता है, तस्वीरें खींचता है, ठीक है, बहुत सारी तस्वीरें खींचता है, फिर वो उनको आपको एक साथ दिखाता है, तो आपको ऐसे लगता है वीडियो चल रही है, सही है। तो होता फ्रेम ही है वो, मतलब पिक्चर्स ही होती हैं। वीडियो कुछ नहीं होती, पिक्चर ही होती है, ऐसे ही है। इसको हम ट्रांसलेट क्या कर रहे हैं, x, क्योंकि हमें 80% पे दोबारा से पीछे मूव करना है, ठीक है। और 100 पे हम क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ओपेसिटी 1 कर रहे हैं हम दोबारा से, और फिर हम ट्रांसफॉर्म और ट्रांसलेट इसको 0 कर रहे हैं, ठीक है। और इसको यूज़ कहाँ कर रहे हैं, किसी के भी ऊपर कर सकते हैं ना हम, तो हम कभी किसके ऊपर कर रहे हैं, मेन के ऊपर, ठीक है, ये वाली। तो हमने कहा एनिमेशन नेम, ये हमने नाम दे दिया मूव इन लेफ्ट। और एनिमेशन की ड्यूरेशन क्या रखनी, जो भी हमने 100 पे रखा है, 0 पे रखा है, वो जो सारा काम होना है वो कितने ड्यूरेशन में होना है वो आपने बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो अभी हम भी 5 सेकेंड रखते हैं, चेक करते हैं कि हम ये, हाँ, ये इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये है कि ये आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो ना, और जितने कंपोनेंट्स हैं उन पे यूज़ कर लो। हाँ, आप क्लास है, ये आपने बना ली, ये रीयूज़ होगी, ठीक है। एक वर्ड होता है रीयूज़ करना किसी भी चीज़ को, तो आप एक दफ़ा एक चीज़ बना के उसको मल्टीपल जगहों पे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। हाँ, नाम देके, सही है। अरे भाई ये लो, सही है, जूम हुआ है, इस ब्राउज़र में ही खोल रहा हूँ, ठीक है। आया ये जिस तरह, सिंपल है, कुछ इसमें वो नहीं है। अगर आप लोग को नहीं आ रहा समझ तो पूछ लो। आ रहा है समझ में? ये हमने क्या किया 0, अब मैं इसके अंदर बहुत चीज़ें डाल सकता हूँ ना, 20 पे भी रख दूँ, 100 पे भी रख दूँ, इसके दरम्यान जितने भी स्टेप्स आ रहे हैं उन सब पे अलग अलग एनिमेशन दे दूँ, चल जाएगी, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। Also specify. So let's take a look at them. The first one is that we can set a delay. So animation delay, let's say 3 seconds. And so now before this animation starts to play, it will first wait 3 seconds. क्या मतलब है एनिमेशन डिले का, कि एनिमेशन स्टार्ट होने से पहले वो 3 सेकंड बाद डिले होगा, फिर चलेगी, ठीक है। तो ऐसा होगा, पहले लोड हो जाएगा, फिर नजर आएगा, फिर एनिमेशन चलेगी। So let's take a look. ये देखो, ठीक है। Alright, so here we go. So it waited 3 seconds. So 1, 2, 3, and there it goes. Okay, so that's the animation delay. Now we can also do something else. I'm actually going to comment out this part that we don't want, because this is just to show you, but I will not delete it so that you can still see it, because its properties can be very useful sometimes. Okay, another one that we can do is an animation. ये पता है कब होती है डिले जब आप पूरी एक वेबसाइट बना रहे होते हो ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी ऐसा होता है कि अभी आपकी चीज़ आ रही है, लोड हो रही है, तो अगर आप पहले ही एनिमेशन चला दोगे किसी को नज़र ही नहीं आएगी, तो आप वेट करते हो कि पहले वेबसाइट लोड हो जाए उसके बाद चलाओ, ठीक है। तो ये डिले जो है ना तब यूज़ होता है। Count. Animation iteration count. So if we set this to, let's say, 3, then the animation will simply happen 3 times. So let's check that out as well. 3 दफ़ा चलेगी। So 1, 2, 3. ठीक है। Okay, but we also don't want this one to happen, so I'm putting it here in the commented code. And then one that is actually quite important, which is the animation timing function. So this is a function which defines how the animation will proceed. So how fast or how slow these parameters that we specified here happen over time. And there are different built-in animation functions, for example, ease out. So ease out, for example, let's take a look at it now.
probably going to look a bit similar, but there are different timing functions. So I already have this one here open. So we have ease in, ease out, and then all of these built-in animation timing functions. So for example, with the ease in function, the animation will start slower and then accelerate over time. And with ease out, it's the opposite. So it will start faster and then it will become slower by the... ये different वो हैं, ठीक है? Ease in, ease out. अभी आप लोगों का काम है कि ये मैं लिंक डाल दूंगा इधर, ये आप लोगों का काम है, आप लोग को सब कुछ चेक करना है, ठीक है? जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो एक चीज़ होती है, दो चीज़ होती है. अगर यहाँ पे 10-15 हैं तो आप खुद यूज़ करें उसको, ठीक है? The end. So this might sound a bit complicated, but we're going to look at animation timing functions again in another lecture. We're also going to look at this cubic Bezier function here, which basically allows us to write a custom function. So a custom timing function different from these predefined functions. And this can actually make all the difference in how the animation feels to the user. So we used, remember, ease out. So let's play it again. And this is how ease in, for example, looks like. So it was slower towards the beginning and then faster at the end. See? So at the end, it happened a lot faster. So let's stick with ease out like we had at the beginning. Okay, and these are the most essential animation properties. There are actually more, but they're not really so important. You can take a look at them if you're really interested. So this is the move in left animation. इसको complete कर लेते हैं. क्या क्या ऐड किया इसने, यहाँ हम भी ऐड कर लेते ताकि मैं लिंक भी डाल दूंगा इधर ही, सही कोड में ही, आप लोग देख लीजिएगा. एनिमेशन डिले, ठीक है, उसने लगा दिया है तो अभी हम उसको छोड़ देंगे. एनिमेशन डिले उसने रख दिया है 3 सेकेंड, ठीक है. और उसके बाद उसने एनिमेशन आइट्रेशन, इसका क्या मतलब है कि ये एक दफ़ा पेज लोड होने के बाद कितनी दफ़ा खुद चलेगी, ठीक है. वो ऐसे तो जब पेज लोड होता है जब चलती है, राइट? ऐसे ही है. जवाब दो यार, सो रहे थे क्या सब आप लोग? फिर एनिमेशन, वो कवाली वाला कहाँ गया? उससे कवाली सुननी आज हमने. आया है ना, वो बैठा हुआ है सामने मेरे. यार ये अच्छा कोचिंग है यार, ठीक है. ये हमने ईज आउट लगाया तो ये इस तरह आ गया. ईज इन लगाएंगे तो वो तेज हो जाएगा थोड़ा सा. ये But we can now also build the move in right. Let's just copy this part of the code. वो कह रहा है कि अब एक और बनाऊंगा मैं, वो मूव इन राइट होगा, मैं उसको राइट से मूव कराऊंगा, नीचे वाले टेक्स्ट के लिए बनाएगा ये. And call it move in right. So how do you think this one will look like? So I want you to pause the video now and try to change these values here so that... अच्छा भाई, अब हमें क्या करना है? हमें कॉपी तो करना है, लेकिन हमें राइट पे मूव कराना है. तो आप लोग मुझे बताओगे कि वैल्यूज कहाँ कहाँ चेंज होंगी? तो ये हम लगाते हैं इधर, ठीक है. ये है हेडिंग प्राइमरी सब, ठीक है. तो अभी मूव इन राइट उठाते हैं, अभी सिर्फ ऐसे यहाँ पे लगा देते हैं, हेडिंग प्राइमरी सब, ठीक है. ये हम एक सेकेंड इसको ऐसे ही रखते हैं सबको बराबर, और मूव इन राइट हम यहाँ रख देते हैं. अभी हम अगर इसको चला के देखें तो ये कैसे चलेगा, देखें, ठीक है. ये एक साथ आ रहे हैं ना, हमें ये उस तरफ से लेके आने. कहाँ करेंगे, कहाँ? यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस और बस चलाएं इसको. अच्छा, उसने क्या बोला है? पहले मेन हेडिंग है फिर सब हेडिंग है. हाँ कर सकते हैं, बस उसने ये कहा था कि आप उसको उधर से मूव करा दो, वो अभी हमने कर लिया, ठीक है. इसमें कोई इशू? 100% किया तो ये मूव इन लेफ्ट हो गया, ठीक है. चलो उसको the animation, instead of going in from the left, इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है. लेफ्ट it goes in from the right. So take a second and try that out. All right, did you manage to do it? Well, let's see. What do you think is the most logical way of doing it? So all we have to do is to actually remove this minus here and put it here. And why is that? Because, as I mentioned,
this 100 pixels here, if it's a plus value, it moves the element to the right because it goes forward in the x direction. And so it's the opposite as we had before, and then the same thing. इसने यहाँ पे भी माइनस डाल दिया. क्यों? यहाँ क्यों माइनस डाला है? बैक होने के लिए. ठीक है, ऐसे ये वाला नीचे वाला देखिएगा. ठीक, लेकिन ये ध्यान रखना आप लोग, ये ना हो कि जब आप वेबसाइट बना रहे हो तो हर जगह पे एनिमेशन लगी हुई है, कोई इधर से आ रहा है किधर से आ रहा है, वो अच्छी चीज नहीं होती. Of course here, because now we want it to move a little bit to the left before it goes back to its original position at 0, right? Okay, so now all we have to do is to add it here. Now instead of specifying all of these properties here one by one, animation name, duration, time, just say animation. And so we can put all of these together, and then CSS will figure out what means what. अब ये बता रहे हैं कि हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी यूज करेंगे. So move in, right? एक ही प्रॉपर्टी में सारे over the duration of 1 second and with the ease out function. सही है, हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं है, पहले उसने हमें बता दिया. अब ये हम ऐसे भी कर सकते हैं, तो हम भी ऐसे कर लेते हैं. इसको एनिमेशन को हटा देते हैं, ठीक है, और इसको हटा देते हैं, और ये तो पहले ही हट गया. जी जी कहाँ से? लो यार, ये लो, अब देख लो. ये हटाना है, यहाँ देना है, ये लो. सही है, चलो यार, जाग तो रहे हो. ठीक है भाई, सही है. ये क्या हुआ है, ये तीनों जो थी उसने वो इस तरह रख दी. ठीक, And that should work now. So let's take a look. And yep, so it's exactly what we had before. Great. Now maybe you have already noticing that here in the end, take a look here at this text, right before the animation ends. You will probably see a little shake here, okay? So let's take a close look at the end. There it was. So it moved a little bit like to the ये कह रहा है ये जब मूव करता है ना तो ये थोड़ा सा एक और जर्क आता है. See it? Let's take a look again. So you saw it moving? So it moved a little bit, so it's a bit shaky. And sometimes this happens in animations. And to be honest, no one really knows actually why this happens. But we have a fix for this. So there is something that we can do. And what we have to do in this case is to simply declare the backface visibility property. Backface visibility and set it to hidden. So the entire heading primary element, because you see that actually this entire element is what moves on this animation. So it's a bit shaky. It's the entire heading primary element. This backface visibility property determines if the back part of an element, when we transform it, is visible or hidden for the user. So imagine we have an element and we rotate it 180 degrees. So it would be logical that we then see the back part of that element, right? But if we use backface visibility hidden, then that back part, so that part that's behind the element, let's say, that part actually gets hidden. Now in this case, we're not rotating anything, we're not doing anything like that, but we still use this fix here, like this hack, in order to fix this little shaking that we see in the animation. And again, no one really seems to know why the shaking happens and why this fixes it, but as long as it works, it's okay. And so कह रहे जब आप ट्रांसफॉर्म देते हो ना तो आपका जो ओरिजिनल वो है ना वो रहता है पीछे. तो इसको अगर आप बैक फेस विजिबिलिटी को हिडन कर दोगे तो वो नजर नहीं आएगा. But we have a fix for this. So there is something ability to hit animation. So it's a bit shaky. It's the entire heading primary element. This backface visibility property determines if the back part of an element, when we transform it, is visible or hidden for the user. So imagine we have an element and we rotate it 180 degrees. So it would be logical that we then see the back part of that element, right? But if we use backface visibility hidden, then that back part, so that part that's behind the element, let's say, that part actually gets hidden. Now in this case, we're not rotating anything, we're not doing anything like that, but we still use this fix here, like this hack,
And again, this is it. Look really close. Take a look at it again, and look really closely here, really close, and it's gone. Right? It's no longer shaking. हम भी देख लेते हैं. आ रहे हैं नजर? यार असल में मे भी अब ब्राउज़र्स वो हो गए हों. ठीक है, ये कोर्स तो पुराना है ना काफ़ी. नहीं हो सकता है ये ब्राउज़र पुराना है ना, तो 8 साल पुराना कोर्स है ये, तो मे भी उन्होंने ख़ुद कर दिया हो. अब ये देखो and everything appears to working just fine. यहाँ पे एक And so yeah, that's how animations वो work. नहीं आ रहा. So this is a really powerful. भी लगा लेते हैं इधर इसके ऊपर. नहीं वो ऊपर उसके बैक पे कुछ नज़र आ रहा था. वो बैक फेस विजिबिलिटी हिडन. ठीक, फर्क तो पड़ा नहीं कोई. Powerful thing, and we could actually go really crazy with this. Imagine we would do something like put a 60% here. अभी आपको बता रहे, देखो आप 60% and say transform at this point should be rotate. वे रोटेट Let's करके say- दिखा रहे हैं. जो ट्रांसफॉर्म है ना प्रॉपर्टी, उसके अलग बहुत सारे फंक्शंस हैं यहाँ पे. ठीक है, ट्रांसलेट एक्स, रोटेट, ये सारी चीजें हैं. ये रोटेट Just something like 120 degree. So degree is a unit we use for rotation. और ये ज़रूरी नहीं है एनिमेशंस में ही हो. ठीक है, ये आप बात ऐसे भी लगा सकते हो प्रॉपर्टीज. And we can also say that in the beginning it should be rotate minus 50 degrees. So just some random numbers here to try out to see what happens, okay? Not really sure how it's going to look like. So it's this crazy thing, Yeah. you see? Let me play it again to you. So this is just something crazy. क्या? Just to show you the का power function लगाया ना that we उसने? have here with these 60% पे animations. ये रोटेट का फंक्शन To make it a bit more realistic, let's say 0% पे rotate it रोटेट 360 degrees. 0 था और फिर उसने 360 लगा दिया. Well, that didn't really work, but let's try 180 degrees. Now it should do something. Yeah. ऐसे. So it starts just right, then it rotates until 70%, I believe, or was it? Yeah, 60%, and then it went back to the initial position because we didn't specify anything here. You could actually put this one here as well. So we're just playing around here with the numbers. You don't really have to follow this. I just wanted to show you that there's not really a limit. So this actually looked the same. Let me try it again, 180 this time. And, well, I guess it didn't work exactly because we have to put it here in this step as well. So let's put it here as well, just to play around a little bit. And here we go. So let me close this one and, of course, delete this little thing that we did here. Because that's just what we want it to be. You saw I selected two things at the same time. You saw that? I'm sure you can do that as well in your code editor. And sometimes it's really handy. So, for example, I have this transform. If I want to select the next one, I just have to hit Command D here in this Visual Studio Code. But the same thing works in Atom or Bracket or whatever. So if I just hit Command D, D, and D, then I have all of these transforms selected, and you see the cursor is blinking here. So then I can delete, and I can write something else if I want. And it's happening in all these places at the same time. All right? So this is not really CSS, but it's a nice trick that you can use in your text editor. Also, I can put multiple cursors just by clicking and then hitting Command or Control, maybe on Windows. And then क्या बता रहा है? ये एक शॉर्टकट की बता रहा है कि अगर आपने सेम वर्ड्स को सिलेक्ट करना हो ना, तो आप एक दफ़ा, जिस तरह ये हेडिंग है, मैंने हेडिंग को सिलेक्ट किया इस तरह. अब आप कंट्रोल डी दबा दो. अब जहाँ जहाँ हेडिंग लिखा होगा ना, एक एक करके ये देखो, ये सारे सिलेक्ट हो गए. अब आप कुछ टाइप करते हो तो ये इस तरह टाइप होगा. ठीक है, ये बता रहा है, इसलिए मैंने इसको तेज़ कर दिया. just keep clicking and it will add multiple cursors. All A, B, C. It's writing A, B, C. Sometimes it's pretty useful about text editor map. Drive around, and then it goes exactly where we want to. And we want to go to the beginning, and then we just need to click here, and then it goes exactly where we want to. Or imagine that I'm working here, and I want to go, and then I'm down. This is also only if you like for this lecture. Do that we can show you something. So imagine we want this to happen, this animation to happen. अच्छा, अब आप लोग ने ये करना है, पहले अपने अपने वो निकाल लें कोड. होपफुली सेव होंगे कहीं पे. नहीं है? निकालें, ये एनिमेशंस लगाएं यहाँ पे जल्दी से. ठीक है, जल्दी जल्दी काम करना है. सिर्फ 15 मिनट है आपके पास. 15 मिनट भी ज़्यादा दे दिए मैंने. स्क्रीन हटा रहा हूँ. ठीक है, क्योंकि इसको कवर करना है हमने. आप आगे मुश्किल एनिमेशन आ रही है. पहले ये बनाए,
ठीक है, इसमें अभी हमने HTML में कोई काम नहीं किया। दोबारा बोलो। हाँ, तो दो क्लास दिए ना, एक तो बटन है, ठीक है, एक बटन की क्लास है और एक बटन वाइट भी हो सकता है, बटन ब्लैक भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, ठीक है, और वो अलग अलग वो देगा। अगर ये सिर्फ बटन के अंदर ही कलर दे देगा तो जहाँ भी बटन की क्लास यूज होगी क्या होगा, सारे बटन के कलर्स वही हो जाएंगे। तो इसने कलर के लिए अलग क्लास बना दी है, ठीक है, तो इससे फायदा होता है। बटन वाइट को आप कहीं और भी यूज कर सकते हो। Only the color changes, and so I'm going to put the styles about the color here in this class, and the stuff that doesn't change from the white to the green button in this button class. So we've done this before, at least in my other HTML course, and so this should be nothing new to you. It's just a good practice. सही भाई, समझ आ गई क्यों क्यों बनाई इसने दो क्लासेस, क्यों बनाई भाई? सर एक तो इसलिए बनाई है कि जो ये बटन बनाएगा वो पूरे के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, जितने भी बटन होंगे, और जो बटन वाइट वाली है वो जो कलर देगा उसको बनाता है। सही है भाई, आ गई समझ में? तो इस तरह हम 3-4 क्लासेस भी दे सकते हैं, ठीक है। Alright, and the text which we have on this link, on this button, is discover our tours. Just like this. And so let's now start styling the button element down here. So you see our CSS file is getting rather long. We're already at 121. ये काम करते हैं, बटन बना लेते हैं। वो कोड आप लोग के पास आ गया होगा, राइट? अगर आप लोग ने रिफ्रेश किया होगा ना तो वो कोड आ गया जो हमने यहाँ लिखा था, सही है, वो आ गया है ना। अभी स्क्रीन का क्या करोगे, ठीक है। और क्लास दी इसने बटन की और बटन डैश वाइट, ठीक है, और ठीक है, Just like this. And so let's now start styling the button element down here. So you see our CSS file is getting rather long. We're already at 121 lines here, but don't worry, we're going to think about architecture and all that stuff a bit later. So for now, in this section, we're just focusing on getting this code ready here and getting this header element ready. And we're going to think about organizational aspects of our code a bit later. So with this, we select a button. क्या बोला इसने? ये अभी इतनी सी लाइन में क्या बोला है? उसने कहा 126 लाइन का कोड हो गया हमारे पास, ठीक है, तो हम इसको बाद में ऑप्टिमाइज करेंगे कोड को, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि ये कोड कम से कम हो जाए। Element, but since it's a link, I'm sure you already know that we should do it like this. All right, and what is this? So this here is a pseudo class. It's the link pseudo class. And pseudo classes are a special states of a selector. So this link here is a state of the button selector. ये कह रहा है ये बटन की क्लास है और इसकी जब स्टेट लिंक हो तो तब ये So like when a user hovers an element, or when a checkbox is clicked, or if we want to select a last child, and many other possibilities. So we use pseudo classes to style elements under a special condition. And it's a very important concept that we're going to use all the time. So the link is a special state of a selector when it is an anchor element. So it functions as a link. Now there's also the visited state. So button visited. So this is the state when the user has already clicked on the button once before and then sees the button again. So that's the visited state. And I'm sure that you know that, for example, if we don't style a link at all, it will appear blue in the beginning, and then once we click on it once, when we see it again, then it will be purple. So that's the default styling of links in most of the browsers. Now we don't want this. We want the visited state to look exactly like the link state, so the normal state of our links. And so we just put them. ये एंकर टैग की बात कर रहा है, ठीक है, तो उसकी स्टेट्स हैं डिफरेंट, लिंक और विजिटेड together. Now the first thing we're going to do is to say that we want the text to be uppercase, text transform uppercase. We want there to be no text decoration. Let's actually take a look so we can see what exactly we want to change. So here we go. So we don't want, of course, this color, and we don't want this underline. So let's get rid of it. So text decoration, and I'm sure you already know all of these. That's why these properties that are not really new to you, I'm not really explaining what they're doing, okay? So none, and then the text we want to be gray. Now remember that we're going to have multiple colors for the button. And so in the white button, the text will be this dark gray, but in the green button, it will probably be white. And so that's something that we have to do in this external class. So let me already create it, actually. So it's called button white. And so here we're going to have a background color of white, of course, background color. And you saw I did this trick where I just write a couple of letters, and then the text editor figures out which property I want. And this way I have to type less code. So white, as we saw already, FFF. And the color should be 777, as we already used before.
Now we also want some padding around the button, of course. So let's specify that as well. And once again, अब ये पैडिंग दे रहा है, पैडिंग का मतलब पता है ना क्या होता है? स्पेस इनसाइड द, I'm sure you're already familiar with how the shorthand property of padding works. So we can specify only one value, and then it will apply everywhere, so top, bottom, left, and right. Or we can also write two values. Then the first one will be for top and bottom, and the second one will be for left and right. So let's say 15 pixels and 40 pixels. So now we have a padding at the top and at the bottom of 15 pixels, and left and right 40 pixels. And we could also write four numbers. Then the first one would be top, the second would be right, the third one would be the bottom, and the fourth one would be for the left side. Okay, now check this out, but I will tell you already that it's not going to work as expected, because it's occupying here the space on the top गायब हो गया ना सब कुछ. ये देखो कलर भी आ गया, पैडिंग भी आ गई. of this other text where it should. That's because it's right now an inline element. So this button here is right now an inline element because it's simply text, but we should display it as an inline block. In this way, the box model works on this element as if it was just a normal block element, okay? So we should always do this if we want to give some paddings or some heights or width to elements, okay? Now another thing that I noticed here, let me just refresh this. So now it has its own space. Another thing that we want is this actually to be here in the middle of this box, right? So how could we do that? How could we achieve this button to be in the center of the box? हाँ भाई. Do you think we should use कैसे करेंगे इसको सेंटर में? फ्लेक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं, फ्लेक्स की बात नहीं करनी है, आगे बात करें. absolute positioning or transforms like we did before? Well, I don't think so, because that would really be overkill. It would be way too much for this very simple problem. So क्या this, बोल रहा है? ये तो बोल रहा है वो ज़्यादा हो जाएगा उसके लिए. this is an inline block element, and so it's treated as if it was text. And so if it's text, and we want it to be at the center of this box, all we have to do is to set the text box, I believe it's called, exactly, it's text box. All we have to do is to set its text align property to center. And that's it. So now it's going to center the text that is inside of the box, including, of course, the button. So just to be sure, yeah, here it goes. And since we're here, let's also add here some white space. हाँ भाई, टेक्स्ट है ना, ये टेक्स्ट था, उसको उसने सेंटर में कर दिया. पहले उसको ब्लॉक बनाया. ब्लॉक का मतलब क्या है कि उसने पूरी जगह घेर ली, ठीक है, फिर उसने उसको सेंटर में कर दिया. अगर इनलाइन होता फिर अप्लाई नहीं होता, लेकिन आपने उसको ब्लॉक कर दिया है तो फिर वो टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया तो वो सेंटर में हो गया. टेक्स्ट बॉक्स की क्लास है ना जो ऊपर लगी between this heading element ऊपर and the button. So ये पूरा जो आउटडोर वाला था ना पूरा, वो उस पे दे दिया उसने, तो सब कुछ सेंटर में हो गया. how do we do white space? Exactly, we use the margin property. And in this case, we just want margin at the bottom. We say margin bottom, and let's say we want 60 pixels. All right, I'm not going to check it right now. We're going to check it later on. So this is the link and the visited state. Now let's take care actually of the hover state. So button hover. So another pseudo class अब ये किस पे कर रहा है? to Hover select पे. a different and special state of this element. So what do we want to happen? Remember, the first thing is for this element to move up. So how can we do that? We use transform, such as we did before. So you see, transform is something really, really important. It's an extremely important property that we're using all the time to create cool and modern effects where elements move around. इसको कर लेते हैं पहले. कहाँ लगाएंगे प्रॉपर्टी हम? यहाँ नीचे लगा लेते हैं, सही है. क्या बोल रहे हैं? बटन की जो क्लास है उस पर क्या हो, उसकी अगर स्टेट लिंक हो या फिर क्या हो, डॉट बटन विजिटेड, ठीक है, तो क्या हो, ये वाली प्रॉपर्टीज उस पर अप्लाई हो जाए, लाइक टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाए, अपर केस. क्या होगा इससे? क्या होगा इससे? टेक्स्ट डेकोरेशन नन से क्या होगा? तो जो आपका एंकर टैग है उसकी लाइन हट जाएगी. और ये क्या है, इसने शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी दी है, तो जो पहली वाली है वो किसके लिए होती है और दूसरी वाली, ठीक है. और डिस्प्ले क्या करवा दिया उसको इसने, इन लाइन ब्लॉक, ठीक है. फिर इसने एक और प्रॉपर्टी लगाई, बटन के हवर स्टेट पे, ठीक है, वो अभी लिख रहा था, सही है, इसको अभी हम ऐसे ही छोड़ देंगे. और दूसरी क्या लगाइए, बिटवीन वाइट, एक इसने क्या बना दिए,
क्या बना दी क्लास, बैकग्राउंड कलर क्या दे दिया इसने वाइट, और फोरग्राउंड मतलब जो कलर टेक्स्ट का होगा वो क्या दे दिया इसने ग्रे। सही है, ये हो गया। और क्या किया इसने ऊपर जाके, और बस बटन होवर ट्रांसफॉर्म, ये क्या 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 दिया था, क्या दिया था भाई? Later on. You sure? Yeah, here it goes. And since we're here, let's also add here some. Exactly, we use the margin property. किसको दिया है? And in this case, we just want margin at the bottom. We say margin bottom, and let's say we want 60 pixels. ठीक है, हेडिंग प्राइमरी को क्या दिया इसने, मार्जिन बॉटम 60 पिक्सल्स। ठीक है, इसको देखें कि ये कैसा नजर आ रहा है हमारे पास, ये देखो। ठीक है, अब ये आपका लिंक है, ठीक है, ये बटन नहीं है। तो अभी ये ना इसको सारी प्रॉपर्टीज चेंज करके ना उसको बिल्कुल बटन वाला लुक दे देगा। ठीक है, इसीलिए ये सारी चीजें लिख रहा है। तो इससे आप लोग को एक और चीज सीखने को मिल रही है कि भाई अगर आपने लिंक को बटन बनाना है ना, ज्यादातर ऐसा होता है लिंक ही बटन बना हुआ होता है, तो आप उस तरह स्टाइलिंग कर सकते हो उस बटन की। All right, I'm not going to check it right now, we're going to check it later on. So this is the link and the visited state. Now let's take care actually of the hover state. So button hover. So another pseudo class to select a different and special state of this element. So what do we want to happen? Remember, the first thing is for this element to move up. So how can we do that? We use transform, such as we did before. So you see, transform is something really, really important. It's an extremely important property that we're using all the time to create cool and modern effects where elements move around or even rotate or stuff. So transform is really important. So now we want to translate it, and we want it to move up. So which direction is that? X or epsilon? हाँ भाई, कौन सी होगी? अपर मूव करने के एप्सिलॉन क्या है? Yeah, that's right. It's direction epsilon, of course. And we want it to move up. So we use a negative value. And that's because in CSS, the epsilon axis moves from the top to the bottom. So it's like from the top to the bottom. And if you want to move up, we have to go the other way around. And so it's negative. So to go up, it's a negative value. So negative. इसमें रिवर्स है। अच्छा, y ऊपर से नीचे आता है तो पॉजिटिव है, नीचे से ऊपर जा रहा है तो नेगेटिव है। ठीक है, -3 pixels in this case. So that's for स्क्रीन की वजह से है ऐसा। hover. Now when we clicked it, remember it looked a bit different. So it's the active state. Remember when we click an element, then that's called the active और ये state. एक्टिव का जब कोई एलिमेंट या उसके ऊपर क्लिक होगा। So it's the active pseudo class. So remember what it looked like when we clicked it? Again, it's a translate because again it moved. And this time we're only moving it 1 pixel. Why? So this 1 pixel up, so this -1 pixel is in relation to the initial state, so the link state, not to the hover. So it's not -1 pixel in relation to the hover state, but it's always here related to the initial link state, okay? So let's check that out. So the margin is there and we hover, so it goes up. No animation so far, but it goes hover पे क्या हुआ है? देखो अप हो रहा है और जब हट रहा and है when we तो click, it goes down a bit, right? So cool. Now all we have to do is to animate this and then also add these shadows. But first let's actually add the rounded corners. So border radius, and here we can put a really high number, like let's say even 100 pixels बॉर्डर रेडियस क्या होता है? or something. And then what it will do is to simply shape it like this here on the edges. So if you put 200 or 500 pixels, it will all still be the same, okay? So now all we have to do is the small animation. So remember that in the last lecture I said that there are 2 types of animations. The first one is to simply use the transition property, which is the easier one, and the more complex one is the method that we used, which was to really specify the steps of the animations with the keyframes at rule. तो अब इसको आप लोगों ने देखना है, ठीक है, क्योंकि हम रिपीट करने बैठ जाएंगे तो बड़ा मसला हो जाएगा हमारे लिए। हमें ख़त्म करके एक प्रोजेक्ट खड़ा करना है ताकि हम जो है ना फिर जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर सकें। आप समझ लो ये फाइनल प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये देखो हवर पे हो रहा है, शेडो आ रहा है, क्लिक हो रहा है तो ये नीचे जा रहा है, ठीक है। ये सारा
जी इधर आओ, करीब आओ, आ जाओ आ जाओ। आ रहे हैं आप लोगों को नजर ना? जब आपको ये देखना है ना कि ये किस जगह पे शेडो आया है, हवर पे आया है ना शेडो, तो हवर पे ही आएगा ना नजर, ऐसे ब्लैंक पे नहीं आएगा। जब हवर करोगे या क्लिक करोगे, दोनों पे देखो, क्लिक करने पे शेडो हमने कम किया है तो वो कम हो जाता है। हाँ, ये क्वेश्चंस जो आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि प्रैक्टिस नहीं हुई हुई, क्योंकि ये पढ़ा हुआ है हमने बुक के अंदर। Again, you should just play around with these numbers and take a look how things behave if you change the values, okay? Now let's just take a look. And yeah, so you see the shadow coming up, right? And now when we click it, it goes down like this. So we lose a bit of shadow and it also becomes less blurry. Just to show you how it would look like with 1 pixel, for example, let's see. So you see, there's a lot less blur now. Right? चलो भाई जी, right? But we want a little bit of blur to make it look more natural. चले यहाँ देखें चुप करके। That we had before. Okay, and with that we have the first part of the button ready. Now to build the second part of this button, which includes some more animation effects, just join me right in the next lecture. अब सेकंड पार्ट क्या है कि बटन के ऊपर हवर, वो जो बड़ा और ये छोटा हो रहा था, ठीक है, वो आप इसमें करोगे 13 मिनट्स की वीडियो में। Let's put it here. Button. So let's now continue building our animated button. So this is the final page and the final button, and what we're missing here is this white part that looks like it zooms out to infinity when we hover. यही रह गया ना हमारे पास, ये जो हम इस पे क्लिक करके ये हवर हो रहा है, and it comes back when we hover out. You see? So this nice effect. It's not really necessary, of course, to add this, but it was a great opportunity to show you the power of CSS and of pseudo elements. So let me show. वो ये कह रहा है कि ऐसे भी हमने इफेक्ट दे दिया काफी, अगर और देना चाह रहे हैं तो और प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। Show you how we do it. So as I said, we're going to use pseudo elements, and pseudo elements allow us to style certain parts of elements. And for example, the after pseudo element that we're going to use adds like a virtual element right after the element that we're selecting, and we can then style that element. And so using this after pseudo element can be really powerful to do some cool effects. And once you master it, you're going to want to use it all the time. So let me just add the after pseudo element. So the trick here is to add an element that looks exactly like the button that we already have, but we put it behind the button. And when एक और एलिमेंट बनाएगा जो कि बिल्कुल बटन के जैसा होगा, we hover out of the button, then this hidden pseudo element basically goes back behind the button. Okay? So let's see how we can do this. First, in order for an after pseudo element to actually appear on the page, we need to specify its content property. So that's always necessary. Doesn't matter what the content is, it can even be empty like we're going to do here, but we have to specify it, otherwise it's not going to appear. And the same thing with the display property. So we have to specify the display property. In this case, we're going to say it's an inline block because the button that we have is also an inline block. And so again, we want it to be exactly the same. We want it to look the same. So we want to have a height of 100%, and we want to have a width of 100% as well. And this works because the after pseudo element is basically treated like a child of the button. And so if we say that we want the height to be 100%, that's 100% of the width of the button. And so suppose ये जो हम लगा रहे हैं ना, ये क्या है, जो बटन के ऊपर लगा रहे हैं, ठीक है, बटन के बाद 100% का मतलब है जितना बटन है उससे 100% और, तो डबल साइज हो जाएगा इस वाले एलिमेंट का, और कंटेंट को हमेशा हम खाली रख देते हैं, ठीक है, ज्यादातर। that the button has 100 pixels of height and 50 pixels of width. And so this after pseudo element will have the exact same dimensions if we set it to 100%. Okay? Now the border radius should also be the same, 100 pixels, so something really big. And now we also want it to be white. But in order for it to be white, we actually should make another after pseudo element, but this time for the button right. So let's put it here, then after. Okay? And the background color should be white. Alright, now let's just see on our page if it actually shows up. So right now it still looks like it's part of our element, and so we should change that. So what we want to do, remember, is to put it behind our actual button. So how can we do that? And we use absolute positioning. So position, absolute, and then we just say it would be 0 from the top and 0 from the left.
Now remember that this absolute positioning needs to have a reference. And the reference is the first element with the relative position that it can find. Now in this case it would be the header, because remember we did that before, but we don't want it to be the header. We want it to be hidden after the button. And so the reference should be the button. Therefore, what we have to do is to set the positioning property of the button to relative. Alright. And so now it should be hidden behind the button. Now one more thing that we have to do is to set the z index. And we will put it to minus. z index क्या होती है भाई? कौन बताएगा? और कोई बताएगा? ये कौन बोल रहा? हाँ बताएं ना, आप सीनियर बंदे हैं ना, बताएं सबको। कैप वाला बताएं ना, दोबारा बताएं, दोबारा सुने भाई। हाँ भाई, दो डिव हैं एक साथ हैं, ठीक है। अगर आप एक डिव का कोई मार्जिन या कुछ भी आगे पीछे करते, पोजीशन जो आप पोजीशन देते हो ना, पोजीशन में होता है एक डिव उसके ऊपर आ जाता है, एक डिव नीचे चला जाता है। अब अगर आपने नीचे वाले को ऊपर करना है और नीचे, तो आप क्या करोगे, जो नीचे वाला है उसको z इंडेक्स ज़्यादा दे दोगे उससे। बाय डिफ़ॉल्ट वो पूरा 0 होता है, ठीक है। और अगर आप किसी को आप 10 दे दोगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगा, नीचे वाले को 20 दे दोगे तो वो उसके ऊपर आ जाएगा। इस तरह ये चलता रहेगा, जिसका भी z इंडेक्स ज़्यादा होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और भी हम देखेंगे। So remember the z index defines the position of the elements if. तो अब जो इसने ये आफ्टर वाला बनाया ना, इसने बिल्कुल बटन के जैसा बनाया है। अब वो चाह रहा है कि वो उसके पीछे रहे, ठीक है। तो उसने क्या कर दिया, इसको -1 कर दिया, -1 वैल्यू दे दी, तो अब ये उस बटन के पीछे आ जाएगा, ठीक है। They're one on top of another. And so this one has -1, and so it's definitely behind the button. Now since it's hidden, I cannot really show it to you on the page now, but we're going to see it in a little bit, alright? So when do we actually want to see it? We want to see it आफ्टर एक और एलिमेंट ऐड कर रहा है बटन के बाद, खुद बनेगा ना CSS से। ये आफ्टर की यही काम करता है ना। आपने कहा डॉट बटन, तो अब डॉट बटन की जो क्लास है उसके क्या करेगा, उसको बिल्कुल आफ्टर आप कुछ भी दे सकते हो, तो उसने बिल्कुल बटन के जैसी सारी चीज़ें बनाई है। हम देखते हैं, अभी हमने देखा था ना कि बटन उसके ऊपर आ रहा था, बड़ा हो गया था बटन, तो 2 बटन थे वो। अब उसने क्या किया, उसको टॉप लेफ्ट 0 कर दिया, तो वो उसके पीछे छुप गया। अब जो भी एनिमेशन होगी वो यहाँ करेगा। When we hover the button, right? So what we're going to do is to write it like this. And this may seem a bit complicated, but it's actually not. So when we hover the button, then we अब कह रहे हैं कि जब हम बटन के ऊपर hover करेंगे तो क्या want होगा, some certain styles for the after pseudo element. So ये this जो उसने आफ्टर बनाया था ना, ये कहाँ पे अप्लाई होगा? looks a bit weird, hover but it के makes totally sense. So this is an after pseudo element only when we have the button on the hover state, right? And what do we want to happen? We want it to be bigger, right? Remember? We want the element to grow and to fade out. And so what we first do is to use once again the transform property. And I told you it was really important, and so yeah, it is. This time we do a scale. So what scale does is to simply increase the element. So if we do scale 2, then it will appear double the size that it had before. So now we can actually check if it's working or not. क्या किया स्केल 2? साइज डबल कर, So reload, and whoa, there it is. So this white part that you see outside here ठीक है। is the pseudo element that becomes visible as soon. सूडो एलिमेंट आया कब? जब उसके ऊपर हवर हुआ। तो आफ्टर क्या करता है, क्या करता है आफ्टर? पढ़ा था ना हमने, नहीं पढ़ा? आफ्टर जो है ना वो क्या करता है, एक एलिमेंट को उसके बाद कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आपने बटन के ऊपर आफ्टर लगाया तो उसके बाद आप कोई भी वर्चुअल एलिमेंट ऐड कर सकते हो, वो नज़र नहीं आता आपको, ठीक है। या वो नज़र भी आता है तो वो उसके आफ्टर होगा, ठीक है, उसके बाद नज़र आएगा। As we hover the button. Let's actually make it a different color here, like red, so just so that you can see the difference. And whoa, now it's everything red, but that's not a problem. For some reason the original button is also getting red, but we still can be sure the pseudo element is behind the button because we still can see the text, right? And so that means that the original button is still on top of the pseudo element.
Okay, but let's put it back to white, where it was. And we don't want to scale it this much. So let's just say 1.5, okay? And we also want it to be animated just like before. So where do we have to put the transition property? Exactly, we do it on the initial state. In this case, the initial state is of course this after pseudo element. So we say transition, and again I'm going to use all here, and then use, like, let's say 0.4 seconds in this case. So here we had 0.2, but we want this one to take a little bit longer. Now what also happens is that the element actually fades up, right? So opacity 0, that's the trick for fading something out. It's going to opacity 0. We did that before in our other animation in the lecture before, and so here we're doing it again. So opacity 0 sets something to invisible basically. And so let's check out if it works already. Yeah, that's actually it. It's already working, right? It comes back. It goes out and it comes back. So really cool, right? Now we can make this a little bit better, because if you look closely at the top of the button, then you see that it looks really small. So the part that's fading out is like really small. If you look. So let's do this a bit. क्या दोबारा आ रहा है? तो यहाँ प्रॉपर्टी नहीं लगाई है, ओपेसिटी 0 की, गायब हो जाता है ना, ठीक है? जब आफ्टर पे आता है तो उसको ट्रांसफॉर्म करता है किस पे? 1.5 पे, उसको 1.5 गुना बढ़ा देता है, फिर उसकी ओपेसिटी कम भी कर देता है, और फिर उसने लगाया यहाँ पे ट्रांजिशन, ठीक है? ट्रांजिशन लगाया 4 सेकंड का, तो 4 सेकंड में यूँ जाता है, और वो जब ओपेसिटी 0 हो जाती है दूसरी वाली, तो वो गायब हो जाता है। हमें ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसे बटन पे क्लिक करने से कुछ लेयर बनी या कुछ हुआ है, ठीक है? एनिमेशन के साथ करते और लंबा होगा या और छोटा होगा? क्या एनिमेशन यूज करते तो कम पड़ता है ज़्यादा? एनिमेशन यहाँ ज़रूरत नहीं है ना हमें, तो उससे भी हो सकता था ना, जल्दी हो जाता। उससे कैसे जल्दी होता? वो तो अपनी जगह से हिल जाता ना। इधर हम लोग कुछ इफेक्ट दूसरा दे रहे हैं ना, अगर वो है तो ट्राई कर सकते हैं उसको, आप ट्राई करिएगा। And actually with this I can show you that there are different scales. 4 seconds. So scale without any x or epsilon here simply scales the entire element. But we can do scale x, and then that's how it's going to scale on the x direction, on the x axis. And here we want to do 1.4, and now scale epsilon, as you can imagine, in the other direction. So let's put 1.6 here. So there are different scales, just like there are different translates or rotates or other functions that we can put here in the transform. So let's check it out. And yeah, so now it looks a bit better. So really cool. There's just one thing left here, because take a look here what happens when we load the page. You saw this? This came up moving अब देंगे इसको एनिमेशन नीचे from से the button. So first we saw these two elements coming in like we coded before, and then the button came up from the button to this position. So let's very quickly code up another animation for that. And we're going to put it here after this one. Actually, I'm going to copy it because it's pretty similar. So move in, let's say button now, from the bottom. This time we don't need any 80% because it's just from one point to the other. And now I'm going to leave it to you to specify this here, what we should put here, okay? So pause. क्या So then करेंगे? you can try to figure out. क्या ऐड करेंगे इसमें? नीचे से ऊपर आ रहा है, प्लस में, और 100 पे क्या करेंगे? 0। क्या करेंगे? ट्रांसलेट 0 करेंगे, 1 करेंगे, क्या करेंगे? क्या करेंगे भाई? 100 पे हमें वापस उसी जगह पे लेके आना बंद उसको, सही है? ओरिजिनल पोजीशन पे। How this should look like, okay? So, did you figure it out? How should the button be positioned right in the beginning before the animation starts? It should be a bit lower than its current position, right? Because it's moving in from the button to its original position. And so we can do translate epsilon this time. And put something like 30 pixels in here. That's because remember, for the epsilon direction, it goes like this. क्या हुआ? माइनस तो नहीं दिया इसने, रिवर्स चलता है ना यहाँ पे, ऊपर जाने के लिए माइनस, नीचे आने के लिए नॉर्मल। So from top to bottom. So if you want to move it down, it's a positive value. Alright, and let's now actually use this animation. Now again, there will be multiple buttons like this, but I only want this animation to happen on this particular button.
And so what I'm going to do is to create a new class on the button. कह रहे हैं कि ये जो BTN क्लास है ना, ये क्या हो जाएगी और भी जगहों पे यूज़ होगी, तो मुझे सिर्फ इस बटन के ऊपर एनिमेशन देनी है, तो मैं एक और क्लास ऐड करूँगा. So button animated, and only this button will have this class. Okay, so let's put it here. Button animated, and then in here I will put the animation. So animation, and I'm going to use the shorten property that I showed you before, and now it's called move in bottom. And let's use a 0.5 second animation, and we're going to use some ease out this time. Okay, now plus what we're going to do is we have a delay, so we don't want to start it at the same time as the others. We want it to start slightly later, so maybe not 1 entire second. ये कह रहा है कि वो जो टेक्स्ट है ना, टेक्स्ट उसके बाद में इसको जो है ना स्टार्ट करना चाहता हूँ, which is the animation क्या time, करूँगा, डिले दे दूँगा, but maybe just 75% of that, so 0.75 seconds. Okay, so I told you that we could put all of these values in the same animation property. So this is the animation name, the animation duration, the animation timing function, and the animation delay. So let's take a look at what happens here. Alright, so you saw that actually the button was visible before the animation happened. Let's take a look again. So it stays visible and then it stops. Now what could we do in order to prevent this? We could simply put these initial states on the button. But that would be highly impractical, right? Wouldn't make much sense. रुका हुआ है ना, पहले नजर आ रहा है फिर एनिमेट हो रहा है. So there is another property related to animations, and this one is called animation fill mode. So animation fill mode, and now we can set it to backwards. And what this does is that it will automatically apply the styles up to 0% before the animation starts. So again, these styles will now be applied before the animation starts, simply by using the animation fill mode and set it to backwards. क्या हुआ इससे? जो इसकी जीरो स्टेट थी ना, वो वाली अप्लाई ही नहीं करी उसने, बैकवर्ड्स लगा के. ठीक है, डायरेक्ट क्या हो गया, 100% अप्लाई हुआ, फिर जीरो होगा. ठीक है, ऐसे क्या हो रहा था, हमने ये देखा था ना कि जीरो से शुरू होगा और एंड तक जाएगा, लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी लगाने से जीरो वालों को उसने शुरू में इग्नोर कर दिया. ठीक है, नहीं आया समझ? नहीं आया? ये रिवर्स शुरू करेगा. ठीक है, बैकवर्ड्स है ना, बैकवर्ड्स 100 से शुरू करेगा. ठीक है, नहीं आया समझ? करेंगे ना, ये देखो ना, ये है ना 0 और ये 100. ठीक है, जब बैकवर्ड्स लगाया तो ये कैसे चलेगा, 100 से ऊपर जाएगा. ठीक है, इसकी इनिशियल स्टेट चेंज हो जाएगी. Animation starts simply by using the animation fill mode and set it to backwards. So pretty amazing, right? So it's really simple solution to this problem. And so let's try it again. And yep. आया समझ में? एनिमेशंस लगाई लेकिन 100 से शुरू करके. So here it works. Alright, and that's it for this lecture, and actually for नमाज का टाइम हो गया ना? फिर क्या रह गया, हमने क्या कोड करना है, कौन बताएगा? कौन सा बटन? ये वीडियो हमने नई शुरू करी है ना. बटन के बाद क्या ऐड कर रहा है? नमाज पढ़ के वापस नहीं आओगे क्या? आप कैसे करोगे, आप वो ही नहीं है. कोड कहाँ से देखोगे, मैं लिखूंगा तो देखोगे ना. अच्छा, एक काम करते हैं यार, इसको स्टॉप